So the first topic is changes in industrial policy and their effects on the industrial growth. Topic is changes in industrial policy and their effects on industrial growth. First of all, what is industrial policy? Industrial policy is strategic effort to encourage development of industrial sector by focusing on broad and sector-specific policies. That is, it is effort to encourage development in industrial sector. Industrial policy is a strategic effort to encourage development of industrial sector. What are the main objectives of industrial policy? There are four main objectives of industrial policy. The first is utilize the human and natural resources that we have, ensure sustained growth, increase employment, ensure competitiveness, international competitiveness. So this will be the index. What is industrial policy? Industrial policy is a strategic effort to encourage development of industrial sector. Why do we need one? To ensure this. So now the timeline of industrial policies. There are two partitions, watersheds. This one is the watershed moment. Pre-LPG, post-LPG. Pre-LPG, first of all, जब ये एकदम पहले स्टार्ट किया था, so there was protectionist policy. There was a central planning and there was a lot of regulation. फिर they said कि थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल एंड फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग आने देंगे कुछ सेक्टर में एंड हाई प्रायोरिटी सेक्टर में थोड़ा सा आने देंगे. देन दे सेड स्मॉल इंडस्ट्रीज भी आ सकते हैं. एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्री. देन दे स्टार्टेड एम्फेसाइजिंग ऑन competition and domestic market, making the industries domestically competitive. Then post-liberalization, the effort was to reduce tariff and interest rate. There was abolition of license Raj, ended several public monopoly and allowed automatic approval FDI in many sectors to the correct prior policy decision. Now from 2000 onwards, that is way forward, what do we write? Okay, there is emphasis on ease of doing business, regulations, friendly trade, investment policy, improve infrastructure, technology and development. ये सब way forward. So in 1956, the industrial policy came in. The industrial sector was categorized into three different categories. There was exclusive monopoly of state, there was state owned but private expected only to supplement the efforts of the state, and the C was open for private. What are the basic objectives of industrial policies post 1991? It was to bring FDI, promote competition, reduce disparity and encourage disinvestment. Now, what are the current government policies? There are different government policies. The first is National Draft Industrial Policy. इसमें क्या है? There is 1 trillion gross value addition in manufacturing sector by 2025. Innovation, technology, financial sustenance and eco-friendly industry को बनाना है. फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 के थीमेटिक एरियाज़ पे फोकस करना है, जैसे टेक, इनोवेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग एंड एमएसएमई, skills and employability.
Then we have national manufacturing policy. So first thing, why was this policy introduced? The manufacturing sector has been stagnant to to around 16% contribution to GDP since 1991. Also, the FDI that comes, that mostly is very skewed and goes mostly to service sector, and manufacturing sector में नहीं आ रहा है. There's also a skill gap in manufacturing sector, that the skilled personnel we need are not available. The national manufacturing policy में क्या है कि 100 million jobs बनाएंगे, 25% contribution करेंगे, tech, environment, ग्लोबल कंपटीशन, वैल्यू एडिशन पे फोकस होगा. नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पे द फोकस इज ऑन मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर ई डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग. सो उसके लिए लेबर कोड्स वगैरह सिंप्लीफाई किए हैं. देयर इज़ इंफ्रा रिलेटेड गवर्नमेंट एफर्ट्स ऑफ सागरमाला, भारतमाला. Before moving on, I'll just have यहाँ पे why do we need one? There were 4 कि क्यों चाहिए था. The 4 reasons were to utilize the human and resources that natural resources we have, to sustainable growth, employment and to improve competitiveness. Okay. फिर रेवोल्यूशन क्या था? प्री था, पोस्ट था. प्री में पहले तो कोई कुछ भी अलाउड नहीं था, फिर हाई प्रायोरिटी सेक्टर में अलाउड था, फिर स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री में अलाउड था, फिर फोकस था ऑन डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस. फिर लिबरलाइजेशन हुआ, एफडीआई पे फोकस गया, ट्रेड रेगुलेशंस पे फोकस गया. देन वे फॉरवर्ड वुड बी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो, इंफ्रा, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, ये सब करो. देन करंट पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज, व्हाट इज द करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी? एफडीआई लाओ, कंपटीशन बढ़ाओ, रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ाओ एंड डिसइन्वेस्टमेंट करो. इज इट विजिबल? FDI law, competition law, reducing the regional disparity, disinvestment. So national draft industrial policy का क्या था? 1 trillion gross value addition in manufacturing, and ये सब में डालो innovation, technology, sustainable growth, eco friendly, IR 4.2 के systematic areas पे focus करो. Then for that manufacturing is stagnant, इसलिए चाहिए एक स्कीम. उसमें स्किल का भी बहुत इशू है. सो मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या गवर्नमेंट पॉलिसी है? कि 100 million जॉब्स, 25% GDP कंट्रीब्यूशन, और ये सब सेक्टर्स में जाएगा. टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड वैल्यू एडिशन. देन इलेक्ट्रॉनिक्स में इंफ्रा है, टेक्नोलॉजी, स्किल, इस पे फोकस करना चाहिए. देन इश्यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड वे फॉरवर्ड, अभी ये करेंगे. व्हाट आर द इश्यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? There are some issues in the governance structure, there are some issues in the infrastructure, there are some issues of the industry itself, and there are some material का issue. अभी इंडस्ट्री जो बना रही है उसके मटेरियल में ही इशू. गवर्नेंस स्ट्रक्चर का इशू क्या है? देयर इज रेगुलेटरी कैलेस्ट्रॉल, टैक्स टेररिज्म एंड लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. इंफ्रास्ट्रक्चर मनी में एफडीआई नहीं आ रहा, इंफ्रा प्रॉब्लम है. इंडस्ट्री में क्या एक्सपोर्ट ड्रिवन माइंडसेट नहीं है, डुआफिज्म की दिक्कत है, टेक्नोलॉजीज लो,
low level of technology, labor law rigidity, and material intensity. India's material intensity is 6 times that of Germany's. So we are using more material, means there is a lot of wastage. So जो supply chain है वो optimize नहीं है. So way forward अभी क्या किया जाए? वे फॉरवर्ड में थिंक लाइक हम लोग पहले रजिस्टर कर रहे कंपनी को, फिर सेटअप करेंगे, फिर प्रोड्यूस करेंगे, फिर एक्सपोर्ट करेंगे. तो रजिस्टर करने में क्लियरेंस लगेगा, सेटअप करने में एफडीआई लगेगा, और सेटअप उसी जगह में करेंगे जहाँ पे देर आर ऑलरेडी क्लस्टर्स ऑफ सेम इंडस्ट्री. सो क्लस्टर वहाँ पे करेंगे और एफडीआई से सेटअप करेंगे. देन प्रोडक्शन में देर शुड बी a strong linkage between government, academia and industry. This is called the trinity. There is smart manufacturing, a collaboration with top institute, IPR rights, industry 4.2 के 6 thematic areas पे focus करेंगे. फिर export में harmonize the export standards to that harmonize the Indian export standards to that of international. और फिर पूरे इसमें circular economy पे focus करेंगे. Then there was a direct jump from agriculture to service sector. What are the reasons? एग्रीकल्चर से डायरेक्ट सर्विस सेक्टर में गया. देयर वाज नो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, है ना. सो क्या हुआ? द नेहरूवियन इकोनॉमी वाज प्लेग्ड बाय रिस्ट्रिक्शंस एंड रेट टैपिज्म कॉल्ड एज लाइसेंस राज. उसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्पेटस मिला ही नहीं. तो देयर आर टू थिंग्स कि एक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया और सर्विस सेक्टर डेवलप हो गया. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों डेवलप नहीं हुआ? because of license raj it did not get impetus. फिर after 1991 आफ्टर 1991 द इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास जितना भी था उतना भी लॉस्ट दे गाइडेंस दे लॉस्ट. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास. और फिर सर्विस सेक्टर क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ 1991 रिफॉर्म्स, बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ स्किल्ड लेबर, बिकॉज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री. Now the question is failure of manufacturing sector in achieving labor intensive growth. Labor intensive क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही, एंड क्यों हो रही है कैपिटल इंटेंसिव. सो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर पे ध्यान दे रहे तो कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ ही होगी. लेबर वाला जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है. जितना ऑर्गेनाइज सेक्टर में है उसका क्या प्रॉब्लम है? लेबर के साथ आता है लेबर लॉ. skilled labor now. Technology is replacing, and standardization of goods and services is possible due to capital intensity. तो गवर्नमेंट इस पर फोकस करना चाहिए. अपैरल, फुटवेयर, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री. फॉर्मलाइजेशन करो इनफॉर्मल सेक्टर का, स्किल डेवलपमेंट, simplify labor law, adequate credit due.